Hi and welcome to Radio Nasha. My name is Rohini, also known as आपकी रेडियो की हीरोइनी. और आज मुझ पर कोई प्रेशर नहीं है to be funny. Usually मैं ये प्रेशर लेती भी नहीं हूँ. I'm just naturally gifted. But That's a great start. And also very modest. लेकिन truly I have no pressure today because with me on the show are the funniest people in the subcontinent. Give it up for Zakir Khan, Neeti Palta, Sumuki Suresh, and Kenny Sebastian. आ गई दोस्तों, आप लोग मेरे रेडियो शो पर आए हैं. कैसे लग रहा है रेडियो पर आकर? बहुत मजा आ रहा है. रेडियो में जो दिख रहा है माशाल्लाह से आपने कपड़े बहुत अच्छे पहने, ये एक खास बात है रेडियो की. आपके जूतों का गेम बहुत स्ट्रांग है. सब लोग सबके दिख रहे हैं. ऐसे वाइड में दिखाएंगे हमके क्या है, मतलब मजा आ गया. मैं पैर नहीं उठा सकती. You know, it's become very digital. You're a lady, are you? I'm trying. Okay, you're trying. Neeti, welcome. How does it feel to be on a radio show, yaar? Because usually this is reserved for bigger platforms, you know. Like जैसे कॉफी विद करण पे आके कैसा लगता है, लेकिन मैं अपने शो को उससे कम नहीं मानती. तो आपसे पूछना चाहती हूँ. मैं भी नहीं उससे कम. आप इतना नेचुरल हैं आप. है ना? हाँ, मेरे को लग रहा है कि अब मेरे को अच्छी फीलिंग आ रही है कि सारे मीडिया लूट के जाऊंगी मैं. Footage you mean? Also, बताइए. What am I saying? कैसा लग रहा है रेडियो शो पर आके? First of all, Rohini is queen of radio for sure. That is So being on her show is our honor and Comicstaan's honor. Oh, so thank you so much. I've been on the best episode. We were on the Ravina Tandon episode. Both of us bonded the most on Ravina Tandon. So now that we're back, me wearing Ravina Tandon clothes. Yes, exactly, exactly. Kenny? I've not been on Rohini's show, and it's about time we have been united. So thankfully now I can sleep at night. I had trouble, but I'll be okay now. Oh, thank you. Thanks so much, guys. It's third season of Comicstaan, and let me tell you, everyone who thinks they're funny, and I started today's show with that also, सबको लगता है कि वो बहुत funny है. लेकिन जब contestants पहली बार आते हैं, there's some sort of self-identification with when you started, perhaps, right? So I want to take you back to one of those first moments, or those first sets that you might have done, a first joke you might have written, or the first time you got a standing ovation or a clap. So if you can think about that moment for me, और मेरी audience को बताइए कि आपकी भी journey वहाँ से शुरू हुई है. आप ऐसी पैदा नहीं हुए थे judge बनके. मैंने तो कंपटीशन से शुरुआत की थी. I have won a competition. I won some 35,000 rupees from that competition. It was a big sum. On a big platform. Yeah, I was just 4 months into comedy. और that was one of the key moments. और that time it was just cute. I think that time में क्या है कि अभी flashback में जाएंगे, negative stories निकलेंगी, काय को याद करना होता. Life में अच्छा चल रहा है, that time में करते रहना. But I remember first time I did Delhi Girl in summer house in Delhi in 2014 August. It was 28th August. And that was the first standing ovation I got, and yeah, since then I have been blessed. Yeah, man. To that. Neeti, पहला joke याद है? पहला joke तो याद है मेरे को. सुनाऊं? हाँ. वो मेरे को actually मैंने drop क्यों किया? खैर. I remember I thought I was so clever because पहला joke था कि how basically along the lines of how men like their women, how they want them, saying कि oh chest बड़ा होना चाहिए but not too big, waist छोटी होनी चाहिए, हाथ में fit आनी चाहिए, hips round हो but you know ऐसे नहीं लगनी चाहिए, वैसे नहीं लगनी चाहिए. तो you know that figures. मैं कहा कि लड़की चाहिए या subway sandwich. मेरे jokes food के आसपास ही होते हैं काफी हद तक. Nice. Can you say दोनों? मुझे भी. Neeti, but when you look back on that joke, मुझे बताओ, what do you wish that you had done better? I think it's a perfect joke. What's wrong with its age? It's a great joke. क्या बात है, fantastic. जब तक लोग नहीं बदलेंगे, joke नहीं बदलेगा. क्या बात है, fantastic. Everybody in the universe has to die For this joke to get better, because it's true. Now I will also add whole wheat चाहिए क्योंकि सबको नहीं actually bread में whole wheat चाहिए लेकिन life में मैदे कलर चाहिए. यानी कि ब्रेड ब्राउन होना चाहिए लेकिन चेहरा व्हाइट. ठीक है. ऑलराइट. थैंक यू फॉर दैट. सुमुकी, आपका पहला जोक आपको याद है? कहाँ किया था ये, मुझे माहौल बताओ, कहाँ था? फर्स्ट टाइम मैंने पहला स्टैंड अप चेन्नई में किया था. और मेरी I don't know, I think I was doing some women's association. they like कॉल किया था कि आप आइए स्टैंड अप कीजिए. ऐसे मैं स्टैंड अप नहीं करती, करके तो देखिए आप. वाह.
तुम पर लोगों को ज्यादा मैंने फेथ नहीं किया था था स्टैंड अप तो जस्ट आई थिंक सिर्फ मैंने नवीन को बताया था कि मेरे को बुलाया ऐसे एंड ही इज लाइक गो डू व्हाटएवर इट इज एंड आई रिमेंबर गोइंग डूइंग एक्चुअली नो वन न्यू नो कॉन्टेक्स्ट एनीथिंग तो फिर सही था बिल्कुल बिकॉज आई थिंक आई डिड सम नाइस 40 मिनट्स आई जस्ट स्पोक ऐसे हाँ ये तो हो जाएगा 40 minutes? या दैट वाज द फर्स्ट टाइम First time ever 40 minutes. yeah and then I came back and Naveen's like come do 15 now so then Which year was great. this? Huh? Which year was this? this is 2014 15 Oh, nice. 14 how or 15, lovely yeah. how lovely First of fantastic all, it's a very nice question. thank you You said it and full feelings came out. Yeah. है ना? I also Yeah. have Naveen, Kenny moments after he's done. this is the first time I've met Kenny so I'm yet to discover Kenny so Kenny go for it That Kenny हिंदी में बोलेंगे हाँ क्यों नहीं? It's interesting. Zakir said 2014. She said 2015. मेरा भी first standing ovation 2014 में हुआ था and you never forget that. क्योंकि like till then as a comedian, whenever you do set, आपका goal है कि पहले 5 मिनट में the audience has to like you. And उसके बाद ही आप jokes कर सकते हो कि audience मेरे side में है, you get who I am, context मिल गया, अभी मैं joke कर रहा हूँ. उस दिन जब मैं शो गया, I entered and audience already likes me and I couldn't believe it. I was like, okay. Major challenge is gone because you're like, you know, I'll turn you around, you judge me, मैं ऐसे दिखता हूँ, ऐसा बात करता हूँ, but you love me at the end of the set. But you walk in and I finished the show and they stood up and they clapped. उस दिन I was like, I'm done with life. that's amazing Yeah, that's everything is awesome bonus. you know with a season or with a franchise like Comicstaan here is a question this is a bit of a skirmish one so all the best I wonder you know क्योंकि हम इस इंडस्ट्री में कितने it's a nascent industry stand up comedy को 10 साल भी नहीं हुए हैं या 10 साल से कुछ साल हुए हैं right लेकिन इतने कम समय में जितना वक्त और जितना you know I would say in a weird term investment okay in terms of people's time and love and all of that जो stand up comedy को मिला है it could lead to us thinking that we are so much bigger you know than we should be okay so when you're in the position of being a judge and there are people who are trying this for the first time I think you might as a human being have to remind yourself a couple of things right so what are those couple of things I think that Kenny will tell better. Kenny what is the most important thing जब आप कॉमिक्सतान पे जज बन के जाते हो तो But he put me on the तो spot. इंसान के तौर पे Just because I'm sitting here. See, the tough question first to Zakir. Zakir ने actually alley-oop. Last roll number से है शुरू ना करते लास्ट सरप्राइज टेस्ट Okay, none of us here feel we are bigger than we are. Yeah. Okay. That's It's the only profession that doesn't let you get arrogant because you could be biggest comedian subcontinent as you said and you can enter a room and a new kid can walk in and get more laughs than you. So you never can ever be like I'm the funniest, I'm the best. This profession doesn't let you do that. And second is none of us expected stand-up comedy to get so big and I think all of us I know all of them when we all started. This was just something we really loved doing and we happened to be at the right place at the right time and it blew up. So none of us are like, oh, this was supposed to happen. So anytime something happens, we're like, oh, interesting. We just continue doing what we're doing. So when we judge, we tell the contestants the same time that ignore all this noise, just be funny. That's all you have to do because nothing else is in your control because we have no idea how all of this happened. So has Kenny answered for everybody no, I have something to बोलिए add. ना Yeah, we actually. have a lot to लेकिन add. इतने अच्छी हिंदी में कैनी ने बोली है तो आप भी बोलिए हिंदी में अच्छा देखो उसको- हमने जब शुरू किया था हाँ जी। the difference is we all started जब हमने literally हाथों से सीन बनाया है जी हाँ True. तो जो स्ट्रगल देखा है जैसे यू नो इट्स नॉट कि हमें परोस के किसी ने सीधे पकड़ा दिया ये लो Amazon प्राइम जी हाँ हम लोगों ने उस जगह से शुरू किया है जहाँ हमारे सेट्स के बीच में बर्थडे केक भी आ रहा होता था लोग हैप्पी बर्थडे भी गा रहे होते थे दे वुड बी ट्रीटिंग अस लाइक ओ हाँ कोने में कुछ चल रहा है हम अपना कर लें किटी पार्टी हमने ये सब देखा है so the people who've come into the scene now might have the privilege or the luxury of being like हाँ this is owed to us Yeah. but I think any of the people who started out years ago हमने देखे हैं वो बुरे दिन तो वो तो भूलते नहीं सो जब आप किसी और को देखते हो स्ट्रगल करते हुए और गोइंग थ्रू व्हाट यू आर गोइंग थ्रू एम्पैथी इमीडिएटली आती है beautiful बट इफ यू हैव नॉट फेल्ट इट देन यू विल नेवर बी एबल टू एम्पैथाइज to do that for somebody else thank you for that Sumukh, do you want to add to that or should we move on to the next Yeah, I think everyone said the same thing. It's ever changing, no, stand up because as I think Zakir pointed out during
the press conferences that nothing is really new. Everything is an existing thought. आपका spin क्या है उसमें, आपका thought क्या है, वो बात अलग है. So, and I think the only thing we constantly remind ourselves is we have to keep up with the times. अभी ये okay stand up आ गया, फिर अभी reels आ गए, अभी YouTube आ, कुछ और आ जाएगा, तो करना ही पड़ेगा. Otherwise, you can choose to not go with the time, then which won't mean that you can last. So, correct. Yeah. Correct. I saw your last special and I absolutely loved it, and you know that. Oh yeah. And you know that, and you know it was fantastic. Zakir, कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? मैं सवाल भूल गया हूँ तो मुझे सवाल नहीं है, बस इन्हें सुनते हुए मजा आ रहा है अभी. मैं साके मूड में. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. So shall we move on? जो आपको ठीक हाँ, है, आपके मन पे, आप जैसे. अच्छा, मैं तो ना रेडियो पे एक रेट्रो बॉलीवुड शो होस्ट करती हूँ जी. और ये मुझे बड़ा मजा आता है करने में. तो मुझे आप लोगों से पूछना है कि बचपन से कौन थे वो लोग जिनको देखा है फिल्मों में, बिकॉज हमारे जो इन्फ्लुएंसेस हैं कहीं ना कहीं बॉल पार्क सेम टाइम के होंगे. Who do you think was one of your comedic influences Indian film industry से? I think I would rate अंदाज़ अपना अपना as one of very important milestone in my childhood because वो फिल्म क्योंकि थिएटर तो उतनी चली पर वो केबल पे बहुत आती थी. जी हाँ. ठीक है ना. और वो जब हम देखा तो वो उन दोनों का जो टाइमिंग है और उसके अंदर बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जिनका बहुत अलग अलग तरह का, सबका टाइमिंग का मीटर भी अलग है उस फिल्म में. उसमें आमिर खान का टाइमिंग अलग तरह से चलता है और जो रंजीत के बेटे हैं जो उसमें जो वो बने थे उनके केयरटेकर, उनका टाइमिंग अलग है. अजीत साहब के बेटे, लॉयन, रंजीत बोल दिया मैंने, सॉरी, अजीत साहब के बेटे, हाँ लॉयन के बेटे, उनका टाइमिंग अलग है. और मास्टर गोगो, हाँ उनका शक्ति कपूर का टाइमिंग अलग है, करिश्मा कपूर का टाइमिंग अलग है, उसमें भी ह्यूमर है, उसमें रवीना टंडन का अलग, एक सबका मुख्तलिफ अंदाज है और वो मुझे बड़ा इम्पैक्टफुल लगा. तो मुझे ये समझ में आया कि कॉमेडी कैन बी ऑफ मल्टीपल वर्जन्स, नॉट जस्ट अ रिलीफ. और मुझे ना मुझे हीरो और जोकर में जो फ़र्क होता है ना उसका अंदाज़ा मुझे फिल्मों से आया. क्या अ लीड कैरेक्टर कैन बी फनी एंड अ हीरो, यू डोंट हैव टू बी फुल्ली जोकर टू बी अ हीरो. बिल्कुल, लाइक गोविंदा. हाँ, मतलब गोविंदा, अमिताभ बच्चन, ये सारे इन्फ्लुएंसर्स जो शुरू में जब उन्होंने कॉमेडी करना चालू किया कि यू कैन बी एन एंग्री यंग मैन एंड आल्सो अ फनी गाय. सो मैं जब स्कूल में होता था तो इफ आई वाज फनी इन 2 periods आई मेड श्योर दैट 3rd period में आई एम स्टैंडिंग अप अगेंस्ट माय टीचर और जस्ट क्रिएटिंग दैट सारे रंग होने चाहिए. या जस्ट क्रिएटिंग दैट कॉन्फ्लिक्ट दैट एवरीबॉडी थिंक्स लाइक अरे ऐसे ही नहीं है भाई, सिंपल नहीं. तो वो इन्फ्लुएंस आई थिंक फिल्म देख के आया, वो रहा मेरे तो. नीति, I think my all-time favorite's always been जाने भी दो यारो. Yeah. That understated, उसमें जो फील थी, जैसे जाकिर ने कहा, एक तरफ यू हैव नसीरुद्दीन शाह एंड बासवानी एंड दूसरी तरफ यू हैव ओ यार डमलो मैं टून हो गया कॉफिन में रीत डाल के और स्पोर्ट्स कर रहे और नया मॉडल लेते हैं. I have watched that film so many times I can quote dialogues out. That's awesome. So yeah, for me, the fact that in cinema you could have something that understated and yet so funny, and while still commenting on like making a social and a political comment there, it blew my mind. You know, it's amazing how we all grew up during a time when the pop culture was unifying. मतलब हम सबको ये पता है. You know, अब के ज़माने में किसी के favorites होंगे या किसी के एक प्लेटफॉर्म पे कोई शो होगा, like for example K-pop, मुझे तो पता ही नहीं है. एक पूरा सब कल्चर है जो मुझसे परे है, लेकिन आपको पता है, you know अंदाज अपना, you know जाने भी दो. Have you heard of a movie called पीछा करो? नहीं यार. So please watch it. Okay. If you mention जाने भी दो यारो, you have to watch something called पीछा करो, which is so stupid, but it is so funny. Like okay, I will give you an example of couple of jokes in there. उसमें एक था कि वो एंड में वो जो जैसे हिंदी फिल्मों में होता है कि सब लोग विलन की गुफा में घुस गए हैं एंड विलन वाज अनुपम खेर एंड ही इज सो फ्रस्ट्रेटेड, ही इज लाइक ओ यार ये कैसा सीक्रेट हाइड आउट है, बाहर साइन क्यों नहीं लगा देते, चिल्ड वी आर सोल्ड हियर. So brilliant. And they had gems like that throughout. And उसमें अमजद खान था and their passcode is कुत्ते को बिल्ली का सलाम, म्याऊ म्याऊ, बिल्ली को कुत्ते का सलाम, बू बू. This is so random. Love. You have please watch a movie called पीछा करो. Thank you for पीछा enriching. करो is a homework for everyone. नहीं but ये कमाल है ना कि ऐसा कोई गेस्ट आए जो मुझे कहे कि आपको ये देखना चाहिए. Thank you. सुमुकी. See, Indian film industry too. While growing up, it's very Manorama or Kovai Sarala. These were two people who I constantly watched because mother kept watching Tamil movies, and their comic timing was just
It was outstanding. Like if anyone seen BV number 1, जिसका Tamil movie है Sati Leelavati, it's insane. Like Kamal Hassan and Kovai Sarala, and Kamal Hassan is a superstar and Kovai Sarala is a comedic actor. Like अगर आप अभी के situation में डालोगे तो एक superstar और वैसे actor को नहीं डालेंगे कि नहीं आएगा, but Kamal Hassan कहेंगे मुझे वही चाहिए. Like such decisions were so interesting. And Tabu and Juhi Chawla, I find them very funny. Like Juhi Chawla in that 1-2 ka 4. What is happening with her Haryanvi accent is insane. I'm like, what? And I'm not understand. I'm like, what is happening? Or Tabu in Hera Fairy, what a small space, but she made sure कि नहीं मैं laugh और रोना दोनों करके जाऊँगी. So like these really stuck with me. Hera Fairy, of course, being the even people who watched Tabu recently in Bhool Bhulaiya, I mean they were just like some people discovered her. What? This generation. But we knew her forever. So we were like, wow, it's the OG, man. Like Tabu's always been the OG. तुम्हारा influence? So मेरा Amitabh Bachchan and Govinda was a big influence where it was the same key. Oh, they're the protagonist. How are they being funny? But just to give a different answer, I think Priyadarshan was making films in Malayalam for quite some time, and then he came and did Hera Fairy in Hindi, and that's when I realized that situation is also what makes things funny, where the characters are just slave to the situation. Or wo funny nahi hai, the situation is funny. And then I realized, so you can, as Zakir was saying, don't have to be the joker or crack a punchline. Just being at the wrong place at the wrong time is funny. And that kind of stuck in my head that at the end of every joke, there should be a Priyadarshan ending. Yeah. Wow. Everything has to correlate somehow. Like if it doesn't correlate, something's missing. That's awesome. That's awesome. But it was fabulous talking to you guys. You guys have, most of you have been on my show before this. But ऐसे मतलब Avengers of Indian comedy को एक साथ देखकर बहुत मजा आया. I wish you luck and success with Comicstaan season 3, and here's to more seasons, guys. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Radio Nasha.